Good evening all. Welcome to Odisha Civils Academy. Aji पुणी आम साइंस टेक पार्ट 2 रा डिस्कशन करबे सिंस योर प्रीलिम्स एग्जाम इज नियरर सो डेफिनेटली टू सच डिस्कशन विल हेल्प अस इन द एग्जाम्पल अस माने इति समस्त एटा बहुत ही सुविधा हबो डिस्कशन एंड खास करके खाली क्वेश्चंस मु सबले आगरु जेमति हम डिस्कस करथिले कि खाली क्वेश्चंस आंसर पढिले हबनी हैला ता संग एनालिसिस बुझिबा भी बहुत जरूरी एनालिसिस बुझिले ही तमरो बेटर रहइबो ठीक अछि फर्दर जदि हमें आगु को जिबा साइंस टेक जदि देखियो साइंस टेक भीतर भी खाली एटा नो कि ओनली योर यू नो डिफेंस और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन सेटा नो सा संग बहुत गोटे ब्रॉडर पर्सपेक्टिव एरिया से कवर करे साइंस टेक जदि हमें देखिबा कि apart from your space defense biotic it also covers you know environmental relations और बहुत ज्यादा जदि देखिबो कि गोटे ब्रॉडर पर्सपेक्टिव रे डेफिनेटली इट तार टेंटाकल्स बहुत अधिक है तो तापरे हमें जिबा वन बाय वन क्वेश्चन जेमति डिस्कस करे प्रति क्वेश्चंस परे हमें एनालिसिस भी डिस्कशन करबे एक्सप्लेनेशंस गुड इवनिंग जय जगन्नाथ बिल्कुल आगु कहरी आसीबो डेफिनेटली आगु कहरी प्रदीप्ता डेफिनेटली सो वॉइस इज ऑडिबल इट्स ओके प्रदीप्ता इज इट ओके वॉइस अच्छी क्लैरिटी इज इट ओके टू एवरीवन आगु मु कहबी निश्चय डेफिनेटली ऑल ओके ओके थैंक यू गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू गुड इवनिंग ज्योति क्वेश्चंस हमें डिस्कशन करिया फर्स्ट क्वेश्चन पुणी मन दे करिवा समस्त पार्टिसिपेट करिवो आई एम गुड प्रदीप्ता थैंक यू सो मच ओके प्रथम क्वेश्चन आके डिस्कस करिवा other than resistance to pest what are the prospects for the genetically question one day what are the prospects for genetically engineered plants have been created माने prospect छड़ा भी ठीक अछि prospect छड़ा भी कौन कहली other than resistant to pest माने जो अटैक कर दे pest attack what are the prospects for which genetically engineered plants माने GM plants मु कहली त माने GM plant okay it means your genetically modified plant amane kon karandi samane to enable them to withstand drought second statement to increase the nutritive value of the products or produce third to enable them to grow and do photosynthesis in space ships and space stations fourth to increase their shelf life अभी तो आंसर कौन हम 1 2 only then 3 4 only all 1 2 4 then all 1 2 3 4 yes anyone can say questions भला भी पढ़ो GM plants ऊपर पचरा है genetically modified plants ऊपर पचरा है कि apart from pest resistant छड़ा भी समान आउ कौन करन to enable them withstand the drought then to increase the nutritive value produce then to enhance them to grow photosynthesis and spaceship to increase their shelf life answer कोचो C कोचो बाकी others तो others साइंस टेक पर पुणी मु आसीबी करंट अफेयर्स रो पार्ट पर जेतु परीक्षा आसी करंट अफेयर्स रो अलगा जिंस पार्ट को नेबी ठीक अछि माने क्वेश्चन आंसर इट विल बी सो मैक्सिमम तमे सी कोचो ओके सो आंसर जदी देखिबा एटा करेक्ट टू एनेबल देम टू विथस्टैंड द ड्राफ्ट बिल्कुल जीएम प्लांट्स बेसिकली डिजाइन कराई छी ड्राफ्ट को विथस्टैंड करिया में दिस इज करेक्ट टू इंक्रीज द न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ द प्रोड्यूस दिस इज आल्सो करेक्ट राइट टू एनेबल देम टू ग्रो एंड फोटोसिंथेसिस इन स्पेसशिप एंड स्पेस स्टेशन दिस इज रॉन्ग as of now वर्तमान सेमती किछि हेइन राइट fourth to increase their self life this is also you know vital because self life increase no hale haboni so answer hela 1 2 4 कोटी अछि answer is C is the correct answer देखिबा explanation statement 1 जदी दोछि कोन देखिला statement 1 जदी देखौछु हमका हला statement 1 रे this is a major area of research conduct to withstand in the drought major area of research and application in genetic engineering for example कौन example सहित drought guard maize माने मक्का कथा हम कहू I'm talking about we are discussing about the मक्का मन देकी सुनो आ एगुडा के एमती मन रखो जेमती मेंस रे भी तुमको काम दबई जिंस गडा मु कहली कि maize माने मक्का drought guard maize was developed
to improve yields under the water stress condition. वर्तमान मक्का एमती डेवलप करा वाटर स्ट्रेस कंडीशन भी से भल डेवलप कर। सेकंड स्टेटमेंट, बायो फोर्टिफिकेशन इज ए की गोल है, बायो फोर्टिफिकेशन इज ए की गोल। A prominent example is golden rice. A prominent example कौन है? Golden rice, right? Which is genetically engineered, है ना? Golden rice, which is genetically engineered to contain higher levels of beta catenin to address the vitamin A deficiency. Second statement जब हमें देखिए कौन nutritional value कोई nutritional value कहाँ देखी ची है ना कि bio fortification is a key goal also. Good evening, good evening. Next statement 3. While research into space, जोड़ा की third statement, agriculture exists a futuristic concept. It is basically it's a futuristic concept, and it was not an established to realize the prospect of genetically engineering plants currently. Currently something किछ है. Just make a note of this. है ना? Interview रे पचाले भी you will have to give. वर्तमान से पर्यंत research चाली ची. Statement 4. Genetic engineering has been used to delay ripening and ripening माने पाचिवा है ripening and reduce spoilage. The flower serbo tomato की अच्छी tomato approved in the 1990s was the first commercialized GM crop engineering specifically extended shelf life. एटा गोटे क्वेश्चन मन रखो किए हेतिला flower serbo tomato tomato ही प्रथम हेतिला तमरो 1990 मसिया रे first commercialized GM crop. This is a question also. Second question को जिबा analysis वाला परे, which institute has been developed a 3D computational model to study thermoregulation in space? Number 1, Indian Institute of IIT Kanpur. Next, asla tamara IISc Bangalore. C, Indian Institute of Space Science Technology IIST. Then Indian Institute of Technology IIT Delhi. Key has been do 3D computational model study किए करिछि को एठरे भाबी चिंती आंसर दिया IIT कानपुर, IISc Bangalore, IIT Delhi, then IISc Sir, all the 3 GM crops are in India. GM crop रे हम करिबा डिस्कस करिबा all the GM crops 3 GM crops ऊपर खाली माने पास्ट क्वेश्चन कहउछ GM crops देखो वर्तमान सब जगह डेवलप होछि इंडिया रे खाली नो इंडिया रे मु जो कहली कि जो टमाटो फ्लेवर टमाटो रे प्रथम थिला जोटा कि वर्ल्ड रे प्रथम हेतिला GM commercialized plant crops genetically modified crops. अच्छा समस्त आंसर दोचो सी समस्त आंसर दोचो एनीवन अदर्स अच्छा मैक्सिमम 3 2 सी दोचो ओके आंसर जो देखियो yes it is correct. Indian Institute of Science Technology IIST is the first which has developed 3D computational model study. This is the correct answer. यार explanation हमें देखियो आगो. Third question पढ़ो. No, it's not IIT Kanpur. It's not IIT Kanpur. It's Indian Institute of Space Science and Technology IIST. Discuss करियो explanation करियो. Don't worry. Next, which institution has developed the Licon technology to map brain cell connection? भला अबे देखो map brain cell connection using light microscope. Light microscope ने की करछि Institute of Science and Technology Austria, Massachusetts Institute of Technology माने MIT, All India Institute of Medical Science AIMS, none of the above. 3 रखुओ 3 रो मते आंसर दियो डेवलप्ड ऑन द लिकन टेक्नोलॉजी टू मैपिंग ब्रेन मैपिंग पे वर्तमान जोडा घेछि ब्रेन मैपिंग कोन देले एठी मैपिंग ब्रेन सेल 3 नंबर क्वेश्चन रो कीवर्ड कोन हला मैपिंग हला ब्रेन सेल मैपिंग मेट कोन कहले 3 नंबर रो ब्रेन सेल मैपिंग यहां पर मते आंसर दियो आंसर कोन दोचो समझते 3 रो MIT USA जने कोच MIT USA तमने B for Bombay किछि जण C कोच आंसर जदि तमे देखिवो it is neither D neither C neither B answer is your A it is Austria Institute of Science and Technology Austria. Now where is Austria? No, it's
not aims. Answer है Austria. We will discuss. Where is Austria? More question है where is Austria? Austria कोठी किए मते कही परियो. Where is Austria? Which place? How what is her capital? Austria is in Europe and its capital is Vienna. Right? प्रथम आंसर देखिबा 2 नंबर आंसर टा कि 3D computational model studies basically की करछे, that is your IIST. Okay. देखिबा research at the Indian Institute of Space Science Technology IIST has developed very good Anupama, very good, has developed 3D computational model study, 3D computational model study to study the thermoregulation in space, basically space thermoregulation space. It shows that microgravity consistently increase human core body temperature, which is important for long duration space mission, which is long duration space mission, right? Jai Jagannath, Jai Jagannath. Okay. Next, microgravity is a condition of new weightlessness. It is a condition for new weightlessness, right? Experienced when objects are in free fall around the earth. Free fall around the earth, not the absence of gravity. Okay, not the absence of gravity. In microgravity, normal body functions like heat regulations are altered due to changes, right? In blood flow, metabolism, the IST model sweating, sweating, shivering, clothing, and organ heat to simulate human conditions in space. Okay. ठीक अच्छे. Next देखिए third explanation टा. Third explanation कौन देखिला कि which institute has developed Lincoln technology to brain mapping cell. Brain mapping cell में कौन देखिले? This is and this is Austria, Institute of Austria, right? Scientists recently developed a new technique करचंदी, that is your light microscopy based connection to map brain cell, basically to map the brain cell, right? That is connection using the light microscope, that is the light microscope. Lincoln was developed at the Institute of Science Technology, that is Austria. Ko jagah re? Institute of Science Technology in Austria. It allows mapping of brain complex neural networks at the nano scale, and also identify specific molecules, specific molecules in those connections. Lincoln combines light microscopy hydrogen expansions. है क्या बार दिखा होचे? अच्छा buffering होची की? Am I audible to everyone? ठीक है कोई ये करो. I just is it okay? Okay, I will look into ठीक है देखा buffering. Am I audible properly दिखा होची? Is it audible to everyone? Just hold on. Okay. Hold on करो. I'm just coming back. Just a minute.
now is it okay? I think thank you for all samaste rohucho bartman eta subuchi. I think some there are some problem, network problem. Bartman subuchi samastu, is it okay or still the problem persists? Let me know. Network glitch, I think. Yes, is it okay or the network is very slow? I think I don't know. टिके स्टिल होची. अच्छा ठीक अच्छे. ओके ओके बेसियल आगु देखिए. ओके नो प्रॉब्लम. ठीक अच्छे. ओके फोर्थ रा देखिबा. ठीक अच्छे बेसियल आगु देखिए मते कहि दो. विल स्टॉप पुनी ई करबा हैला. फोर्थ रा देखो. इन एडिशन टू द फिंगरप्रिंट स्कैनिंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी used in the biometric identification of person. कोटा देखिबा. Okay 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 sure. Iris scanning, then retinal scanning, voice recognition. Okay, select the correct answer using the code given below. That is 1 only, 2 and 3 only, 1 and 3 only, 1 2 3. Voice clear अच्छी. हाँ yes I think मु देखली ना मैंने kbps टे कम अच्छी. Actually land रे टिके problem रहउछ बोधे. I do not know हठात के कोन. Okay 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 thank you. Okay eta को fingerprints which of the following can be used in the biometric identification of a person? Iris scanning, retinal scanning and voice recognitions. कोटा नहीं परिवार. Select the correct answers. 1 only, 1 2 3, 1 3 all. 1 2 3. 4 कोचो D हैला. D 4 D answer. Then others. Okay C ठीक अच्छी. All C आ भितर. Answer जदि देखियो it is iris scanning is okay. Then retinal scanning is okay. Voice recording is okay. सब जगह voice recognition. So जदि हमें देखियो answer is your all are correct. It is D for Delhi, right? Biometric जदि देखियो it is D for Delhi. सब जगह इतरे correct अच्छी. 2 and 3. Okay, correct. 5 number देखियो. Consider the following. Electromagnetic radiation. भला भी सुनो question. Electromagnetic radiation, geothermal energy, gravitational force, then plate movements, rotation of the earth and revolution of the earth. या भितर which of the above are responsible for bringing dynamic changes on the surface of the earth? Surface of the earth रे किया भितर responsible dynamic changes ପାଇଁ. 1 2 3 4 only. Then हैला 1 2 3 4 only dynamic change. Question देछि dynamic changes फाइन किए. Then 1 3 5 6, then 2 4 5 6, then all 1 2 3 4 5 6. किए मते आंसर दबो. Yes, responsible for dynamic changes on the surface of the earth. Dynamic changes फाइन कि जण A कहउचो 1 only A D C. ठीक अछि. ओके A D C. ऑडियो ठीक अच्छी. ओके गुड. हाँ जियो टिके बोधे कोन आई थिंक सम काम किछि चालुछि बोधे रेक्टिफिकेशन एमति तो बोधे रेयर मु केबे भी देखिनी एमति हबार. द फर्स्ट टाइम आई मेट इन 2 years. ओके आंसर जदि देखिबो एठी कंसीडर किया पे रेस्पोंसिबल फॉर प्रिविंग डायनामिक चेंजेस ऑल आर करेक्ट. या भितर देखिबा केमति इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन is also playing a very important role हैला अर्थ सरफेस पे. जियोथर्मल एनर्जी दैट इज आल्सो. ग्रेविटेशनल फोर्स रे कोन वे क्रिपिंग वे लैंडस्लाइड वे
tidal wave हुए हैला. So this is also responsible. Plate movements, so we know tectonic plate movements रे mountain plateaus सब जगह form हुए. Rotation of the earth, this is also rotation of the earth because of the Coriolis effect, right? Coriolis effect भी इथरे हुए Coriolis effect रे. Then revolution रे देखो of the, that is also revolution पे your day night changes होती. So if all are correct हैला, all are correct एठी हैला, all are. So answer is your D for Delhi हैला, answer is your D for Delhi मन रखता. 6 number question देखिबा. Which country has developed a high resolution ocean simulation system? Question, which country has developed an high resolution system called LICMOC to be better study ocean climate pattern? Australia, China, Japan and Russia. Australia, China, Japan and Russia. अच्छा काला बैसाखी पाई नहीं. अच्छा अच्छा ओके करेंट ओके प्रॉब्लम रोज जिंसा कौन हबो ऑस्ट्रिया चाइना सब आंसर दोचो बी बी मैक्सिमम हला. yes correct answer जदि हमें देखिबा it is correct, it is B for China. We'll discuss this one. China is the correct answer, right? Next, which group of organism has been identified as a key phosphorus gatekeepers in an ancient and weathered soil? Ancient or weathered soil. Soil microbes and fungi bacteria, insects, algae and none of the above. किया अभी तक मैक्सिमम आंसर दोचो ए बोली. ओके यस आंसर दे देखिबा ए इज द करेक्ट आंसर. ए इज द करेक्ट आंसर. विल डिस्कस प्रथमे 6 नंबर जदि क्वेश्चन टा डिस्कस करिवा. चाइना कोन चाइनीज रिसर्चर्स हैव रिसेंटली developed high resolution ocean simulation system. High resolution ocean developed system called LICOMOC MK++ to better study the ocean and climatic environment. Ocean and climate patterns. Basically Chinese कहाँ पर focus करते China? Basically Pacific Oceans को focus करते. They are focusing on Pacific Ocean, right? They are focusing on the Pacific Ocean, right? So LIMOC stands for the Laboratory for Atmospheric and Oceanic Modeling. Laboratory and Atmospheric your Oceanic Modeling. Institute of Atmospheric Physics in Climate Oceans. Okay, that is basically some performance computing upgrade korchandi, right? It described as a microscope because of its ultra high resolution abilities. Okay, this advanced system allows scientists to clearly observe the ocean, complex ocean processes, basically complex ocean processes such as eddies and heat transport. Eddies or heat transport. Eddies mean your current simulation, current transport, eddies and heat transport. It helps improve the understanding of how ocean influence climate. Ocean can be influence the climate. LIMOC can be enhanced to forecast extreme weather events like your typhoons, marine heat waves and floods. Typhoons, marine heat waves and floods. So these are the things जोटा कि हमें देखले कि China इटा basically वर्तमान मन रखो very important for to study typhoons, right? To study your typhoons, marine heat waves, marine heat waves, right? Marine heat waves and floods. Very important this one. Next देखिबा soil microbes जदि हमें देखिबा कि कौन important करछे ए क्वेश्चन टा कारा. This is which group has been identified the key phosphorus gatekeepers. Phosphorus gatekeepers, that is your soil microbes. Soil microbes देखिबा recent study of nature geoscience found that soil microbes particularly fungi and bacteria play a central role in regulating phosphorus availability and cycling over a span of 70 माने जदि हमें देखिबा कि 7 lakhs years. जदि हमें देखिबा जो microbes सेमानकर role near about 7 lakh years in the कोलोला कोस्टल ड्यून सिस्टम तांकर ଗୋଟେ सिस्टम अछि तापर से माने वर्कआउट करन कि ए सॉइल माइक्रोब्स बेसिकली फंगी एंड द बैक्टीरिया. दिस माइक्रोब्स मैनेज द रिलीज माने कोन करंती व्हाट इज देयर वर्क. दे मैनेज द रिलीज एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फास्फोरस in nutrient poor soil, acting as a crucial gatekeepers in the ecosystem matrix dynamics, right? These microbes adapt by replacing
phospholipids with non-phosphorus lipids. They also improve phosphorus efficiency in their metabolism to survive the low phosphorus soil. So एमाने जो यदि हम देखिबा कि माइक्रोब्स माने algae हो fungi हो एमानकर बहुत soil nutrients एमानकर contribution is very much हैला because of them the nutrient cycle is perpetuating or continuing right. 10टा क्वेश्चन आज हम करेबा 10टा क्वेश्चन देखि तापर हम रखि द again the minuteman हैला minuteman 3 intercontinental ballistic missile भला क्वेश्चन सुनो minuteman 3 intercontinental ballistic missile हैला I am talking about the ballistic missile is intercontinental ballistic missile जोटा कि ICBM was developed by which country? United States, France, Germany, Russia. किए करछि minute हैला जोटा हम देखियो जदी minute man or minuteman whatever in pronunciation minute man जदी कहबा minuteman ICBM किए डेवलप करछि minuteman ICBM आंसर को जान दो A any other अच्छा maximum A answer दो yes A is correct it is United States of America we'll discuss United States of America has developed this one very nice next which airport is the first in India prathame first in India to deploy a runway बढ़िया question data first हैला airport in India to deploy runway rubber removal machine हैला किए रनवे रे माने एयरपोर्ट रो जो रनवे अछि सेते रबर रिमूवल मशीन्स करछि हैला रबर आरए कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोचिन जयपुर नोएडा देन योर चेन्नई किया भितर रहइबो विल से 9 नंबर क्वेश्चन 9 रो नोचो D जण बाकी 9D दोचो 9D ऑप्शन दोचो A दोचो बहुत जण A D बट आंसर जदी देखियो it is neither A neither B neither D answer is your Noida International Airport मन रखो it is the Noida International Airport जोटा कि बेसिकली हैला रबर रनवे पर जानिबा ऊपर प्रथम देखता यूएस रो जो minuteman 3 United States of Air Force recently conducted a age question term minuteman 3 ICBM intercontinental ballistic missile हैला डेवलप जो कंट्री ऊपर देखिबा की कोन करछि this is a test of LGM 3G हैला 30G minuteman your minuteman 3 intercontinental ballistic missile ICBM this missile is nuclear capable and can deliver a warhead to the part of the earth what a part of the earth L in LGM means kon L ro mane soil launched hela silo launched G stands for your surface attack and M means to guided missile M stands for your guided missile minuteman 3 जदि म कहबी was introduced in 1970 में सर प्रथम हेतला 1970 रे हेतला was the first US missile with multiple is it audible to everyone is it okay am I audible to everyone is it okay to everyone is it okay hello वर्तमान ठीक से सुबुची वापरिंग होनी बता now it's okay is it okay now okay all right very good okay thank you actually जो ऑफ रूटिंग हे जाईची कच्छ पछ उपड़ी जाईची तार माने जो भांगी जाईची सब इलेक्ट्रिक पोल ता से जुग बदे बहुत से माने सजाडु थिले ठीक अछि
ओके ओके ठीक अछि ना क्वेश्चन कोन पचारछो कि इंडिया यूएस टू बी आनी हुई जाय हां यस 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 हला इंडिया यूएस ओके सो वर्तमान जदि हम देखिबा कि कोठी डेवलप करथला डगलास एयरक्राफ्ट ए जो जिंसटा हम डेवलप हेइथिला हला कोठी दिस इज एलजीएम दैट इज डगलास एयरक्राफ्ट यूएस जो करथला माइन्यूट मैन जो करथला इंट्रोड्यूस 1970 रे and was the first US missile with multiple independently targetable recently vehicles. It is the only land-based missile in the US nuclear trade. Kota land-based missile trade and developed in the Douglas aircraft. Douglas aircraft जदि देखिबो now is a part of Boeing. Boeing जो part तमे देखो हमर जो तमे देखिबो लास्ट ईयर जो हेइतला Boeing दुर्घटनाटा गुजरात रे हला फॉर्मर सीएम विजय रूपाणी सी भी चल जाते इट वाज अ वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट सो बोइंग जो बेसिकली बोइंग कंपनी हैला एटा मन रखो बोइंग कंपनी जिंसटा को करछ हैला फॉर्मर ठीक अछि बोइंग कंपनी हैला फॉर योर एटा आउ गुटे पॉइंट रछि सो बोइंग रो जिंस रे माने एटा दे आर जस्ट यूएस गवर्नमेंट माने यूएस डिफेंस प्लस बोइंग कंपनी दे हैव by collaboration they have developed this system. The US is currently maintained 440 minute man missiles in its arsenal. 440 टा US बनेला right very good 9 number question देखो नोएडा कौन थिला कि एयरपोर्ट इज द फर्स्ट इंडिया टू रनवे रबर किए करछि इंडिया रे प्रथम एयरपोर्ट किए जे रनवे रबर रे करछि हला रनवे रबर रिमूवल मशीन्स हला रनवे रबर जानिबा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रथम जोटा कि जवाहर रे होची हला नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट योर पार्टनर्ड विथ कहा संगे एटा गोटे क्वेश्चन पार्टनर्ड विथ द एनलोन टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन मन रख कहा संगे मुझे लिखली एटा गोटे परीक्षा रे पडिबो हला दिस एन इंपोर्टेंट एनलोन टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन हला एनलोन टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन राइट developed a runway rubber removal machines named at that is clean jet ram this is a clean jet ram basically so these eco-friendly machines in design basically कौन है this eco-friendly machine designed to enhance the runway को enhance करिवे safety by removing rubber deposits को समान करिवे and other contaminants using ultra high pressure water jets without abrasive chemicals. So basically यार टेक्निकली केमती करिवो से प्रेशर जेट करके रबर रिमूवल करिवो जेट रे जोटा कि कोन हबो मैक्सिमम कोन होची जो रनवे रे हला एक्सीडेंट प्लस कंजेशन जो रोची प्रॉब्लम को दिस इज जनरली अवॉइड करबे सो दिस इज एन बेसिकली रिमूविंग रबर डिपॉजिट्स बहुत सारा रबर डिपॉजिट हला बहुत जगह कोन होची सेटा प्रॉब्लम करोची व्हेन दैट इज एन लैंडिंग और लिफ्टिंग ऊपर टेक ऑफ कर लैंडिंग एंड टेक ऑफ सॉरी हला so they are contaminants using the ultra high pressure water jets to for abrasive chemicals so this is all about manako Noida International Airport au kehi bhi karna Noida is in Uttar Pradesh question number 10 during a thunderstorm manako during a thunderstorm the thunder in the sky is produced by pratham question statement meeting of cumulonimbus cloud in the sky second statement lightning that separate the nimbus cloud third violent upward movement of air and water particles select the correct answer using the code given below 1 only 2 and 3 only 1 and 3 only none of the above questions वाला अभी पढ़ा हाँ एयर एशिया बैंड रहेगा very good ना इंडिया ब्रॉड करिनी इंडिया एपन तो किनिनी टिल नाउ हला इंडिया ब्रॉड करिनी से मिसाइल टा आंसर दियो मते एटा 10 स्किप आसुनी अच्छा आंसर जदि मु कहबी एठी प्रथम जदि आंसर देखिबो समस्त कुछ जन कहउछो सी 1 and 3 सी कहउछो किजन अच्छा सी मैक्सिमम सी को बट आंसर जदि देखिबो प्रथम 1 by 1 कहउची मीटिंग ऑफ द cumulonimbus cloud बिल्कुल भी नो कोन देछि थंडरस्टॉर्म हला ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म द थंडर माने जो बाडे घड़घड़ी इन द स्काई प्रोड्यूस बाय द किए करे थंडर माने कोन घड़घड़ी किए प्रोड्यूस करूची cumulonimbus cloud बिल्कुल भूल lightning of the separates the nimbus cloud बिल्कुल भूल violent upward movement of the particles बिल्कुल भूल तीनटा जंक भूल आंसर इज डी फॉर दिल्ली अब पूछो क्यों व्हाई एमाने हेले समस्ते
they all are physical process to reach. These are the physical process. एमाने physical processes, they are not. ठीक अछि एमाने physical process, atmospheric process एमाने करंतिनी. This is wrong. Explanation देखिबा किए normal जदि हमें देखिबा thunder is caused by the rapid expansion of air surrounding the lightning bolt. ହେଲା rapid expansion of air जेतला ऊपर को उठे केमती rapid expansion of air ऊपर केमती उठिबो rapid expansion of air ହେଲା जेतला ऊपर जाई converge हेबे when they converge होला expand करबे and ऊपर converge हेबे एटा गोटे पार्ट गला पुनी एपडो आ गोटे आस्तबो पुनी हैला पुनी आ गोटे एपडो आस्तबो पुनी आ गोटे एपडो आस्तबो एमे जेतला converge हेबे एई जगह जेतला air converge हेबन रखो this is a nodal point, this is b nodal point सेई जगह रे ही तमर जेतले कोन होबो thunderstorm होबो हैला bolt when lightning strikes it hits the 3 lakh degrees centigrade मन रखो 3 lakhs degree centigrade in a fraction of second गोटे fraction second 3 lakh degree can you imagine 30,000 I'm sorry 30,000 degree celsius हुआ जाए कि lightning रो इतने पावर थाए कि गोटे वर्षर गोटे सिटी रो से लाइट रिक्वायरमेंट को मीट ऑफ करी इतने पावरफुल दैट इज व्हाई जेते लाइटनिंग पड़े हैला थंडरस्टॉर्म रे इमीडिएट पर लाइटनिंग पड़े जोटा पड़े तापर संगे संगे से गच्छ पड़ी जो कि लोक घर जळि जाय कि गच्छ जळि जाय इट इज सो पावरफुल राइट दिस एक्सट्रीम हीट cause this extreme heat cause air to expand explosively हैला it cause the air to expand explosively shock waves that we hear as a thunder मन रख प्रथमे लाइटनिंग ता परे हैला परे तापरे कोन होबो एते बडो गोटे शॉक वेव क्रिएट होबो आ बहुत जोर साउंड हुए एक्सप्लोसिव साउंड दैट इज कॉल्ड नथिंग बट एज द थंडर मन रख एटा पडला बेले ई जो तमरो जो देइछि डायग्राम मींस आई मीन जो बोल्ड लेटर दैट विल हेल्प यू आउट हैला एक्सट्रीम हीट causes air to expand very explosively हैला and shock waves that hear to as a thunder. Next the mentions options are describing the physical processes. जदि देखिबो the mentions options एमाने हेले कोन these are the physical processes these are not contributing that one एमाने हैला से जुगु is it clear to everyone right हैला सबले पढिबो जोटा कि मु सबले खाता पे निक बसिबो सरला पर भी वीडियो author देखिबो आज के वीडियोटा 15-20 मिनिट पे असुविधा हेगला हैला ठीक अछि विल प्रोसीड क्वेश्चन नंबर 11 who has become the first Indian मन रखो who has become the first Indian to complete NASA's air and space program किए प्रथम किए complete हैला India's to complete NASA's air and space program गोटे बहुत इंपोर्टेंट एगोडा सब इंडिया नंबर 1 जानवी डांगेटी बी शिवांगी सिंह सी भावना धामी डी अवनी चतुर्वेदी yes anyone किए प्रथम इंडियन फर्स्ट टू कंप्लीट नासास एयर एंड स्पेस प्रोग्राम नासा रो जो एयर एंड स्पेस प्रोग्राम हेतला एमान को भितरु किए प्रथम एटा कंप्लीट करथले वाज बिकम द फर्स्ट इंडियन आई मीन फर्स्ट इंडियन किए जानवी दागेंदी देन शिवांगी भवाना देन अवानी कि जन कोचो बी इज द शिवांगी अदर बी अच्छा सी बी ओके आंसर जो देखियो योर आंसर इज योर नीदर D neither C neither B. It is your Janvi Dangeti. Okay, we'll discuss Janvi. It is Janvi. 12 number. What is? No, we'll discuss. Don't worry. What is kombucha? It's a very good question. Again, what is kombucha? That was recently mentioned in news. बर्तमान news रे देखि तो किस दिन तळे kombucha ऊपर से माने कथा आइतले ना kombucha ऊपर. तो किए से माने was it a flowering plant? Is it a news रे थिला किस दिन तळे is it a flowering plant is it a fermented tea and is it a invasive weed or it is a traditional medicine kombucha कोन थिला either flowering plant or a fermented tea or a invasive weed or a traditional medicine की कहि परियो anyone can say this is the last two questions अच्छा बी आंसर दो आंसर जो देखियो it is not flowering plant not C invasive not weed not traditional medicine answer is your B fermented tea this one right discuss करिबा अच्छा प्रथमे देखिबा किए प्रथमे इंडिया थिले हैला
जे कि first to complete NASA's airspace program, that is Janvi Dangeti. Recently, India's Janvi Dangeti was the announcer of the first Indian astronaut, prathame Indian astronaut to join Titan space mission schedule. है Titan space mission schedule 2029 2029 रे. She is the graduate Koti. She is the graduate from National Aeronautics Space Administration NASA. International Airspace Program has received global training, right? Janvi is also a strong promoter of STEM. Janvi ka kaun our contribution? STEM. STEM kaun hela amara? That is science, technology, engineering, and mathematics. STEM. Hela? Education among the youth. Is tanku bartman ambassador rakha hai to you encourage the youth and to promote for this STEM. Hela? Science, technology, engineering, and mathematics. This is this is the very backbone for a country to develop. Because in terms of your your science and technology and the development of the industries, or we can say the modern any of the modern civilization mainly based on your development of your science technology. And of course the STEM is the ministry is mainly focused, government of India is mainly focusing on this one, science, technology, engineering, and mathematics. Manraka Janvi Dangeti, he is made the promoter and the first Indian NASA space program the first Indian to Titan space mission NASA. 12 number देखिए fermented tea kombucha. It is a basically Chinese raw. At 8-week study in Brazil find कौन करते हैं kombucha improves gut bacteria. मन रखा जो black and rum लिखी थी ताकू है ना ताकू सेटा मन देखी इटा लिखी ना वो कौन हो इटा improves the gut bacteria in people with obesity. जो मन कर obesity था है सेटा basically ये जो fermented tea टाकू दिया हुए है ना by increasing good microbes को माने increase करियो and reducing the harmful one को reduce करियो. अच्छा, however, it did not improve blood sugar को बढ़ाए नहीं और inflammation markers. Kombucha is basically fermented tea, that offers complex flavors without much sugar and caffeine. Actually, it is basically tasty no, है ना? It is got fermented, basically complex flavor था है. माने टिके बासना भी होबो कड़ा ऑफ कोर्स सबु दवाई जोडा सटा दिखो देह पई सबले माने कड़ा तीखा थिबो एंड very different kind of orders thibo, right? So it is like this one kombucha. Basically it originated jab diva background it originated in northeast China it developed with the northeast China around 220 BC before Christ, right? And was known for its engineering and detoxifying effects. Kombucha, engineering and detoxifying effects. Kombucha is becoming popular in India with market growing of 45 million to 2020 to 120 million. But देखो India रे बहुत चाहिदा. पाखापाखि 45 million now it is shoot up to 120 million. My goodness. हला माने 4.5 कोटी रो 12 कोटी लोग को यार trading हेलानी. हला kombucha is such kind of is an helping for the persons or those who are affecting with the obesity. खास करके ना youngs मानक भीतर obesity बहुत अधिक बढ़लानी and of course 50 परे भी बहुत. India रे सबुठु major problem है obesity as per the WHO report. So kombucha is getting popular. ठीक अछि आज पई इति की हला किछिटा अनाउंसमेंट पर करिवार अछि. इंटरव्यू शेड्यूल्स प्रोग्राम चलछ ऑलरेडी. इंटरव्यू शेड्यूल्स आल्सो स्टार्टेड. इंटरव्यू मॉक इंटरव्यू आरंभ हो गेलानी हला मोय सेक्टर रे इन द लास्ट ईयर बोले ओनली ऑनलाइन रे आज पर द सेटअप ऑनलाइन जो माने फिजिकल मीट करिया को चाहिबो दे कैन मोस्ट वेलकम. बहुत पिला भी संध्या बेले आस्थिले. ठीक अछि. You can meet up and take the guidance पढ़ी कि नहीं कि जहाँ भी free guidance जहाँ भी किसी पढ़ी आप में definitely you are most welcome. Interview schedule जो वन दबा को चाहो they can directly access me and it is completely there is no charging for that one है ना. Feel free for that one. And apart from that one interview schedule पर जिम्ति जानते हो optionals is also going on है ना, online offline both, and also the your prelims test series also going on, and also the GS program पे जो those are interested they can ping me for that one. Okay. Thank you so much. Thank you everyone. We'll again meet. Thank you so much. Thank you Pradeep. Thank you so much. We'll meet again. पुणी मु current affairs रो science tech जदले new पुणी अलगा गोटे different part. Current affairs with broader aspect. ठीक है जो prelims पे पुणी जोड़ा vital से definitely कारण basing on the request last science tech रे किछु पिला कहले sir we will continue हमको बहुत जिंस science tech रो होनी definitely आउरी पुणी different science tech आप पर गोटे different topic टाणी. ठीक अछि.
जोटा जनरल पैटर्न ऊपर. Thank you so much. Thank you so much. Bye bye. Take care. Jai Jagannath. We'll meet again. Thank you so much. Good night, everyone. Good night. Thank you. I'll be back again. Thank you so much.